you can be able to understand whatever we discussed in the class. Okay, चले इस तरह करते हैं कि I will conduct my lecture both in Urdu and English. Then if whatever I say और वो आपको समझ ना आए, so then you can ask me questions and even you can ask me for explanation in Urdu. So in order to have all the students going on together and can be able to understand what we will discuss, what we will be discussing in this particular course, तो इस तरह करेंगे कि I'll have the both languages side by side, Urdu and English. Okay. Before we start discussing this paper, English precise and composition, do you know something about the syllabus of this particular paper, English precise and composition? Okay, so Sana Fazal knows about it. Okay, up. Chale, what so for I'm going through the chat, and what I've observed is that some of you know about syllabus ka aapko pata hai, and some of you don't know about it. No problem. We will discuss each and everything in detail. जिनको syllabus के बारे में पता है, can you tell me something about what is included in the syllabus of this particular paper? It's a compulsory paper, English precise and composition. Can you tell me something about what is there in this paper? Okay, बिल्कुल precise भी है इसमें, comprehension भी है, फिर उसके बाद some of you have written preposition, grammar का section भी है. Yes, then sentence correction is also there. फिर उसके बाद words का अपना section है, that is synonym and antonym, उसको आपने attempt करना है. That is the analogy exercises. Idioms भी है, pair of words भी है, हाँ translation भी है. Good, you people are knowing about it. This is very good. और फिर उसके बाद आपने precise लिखनी है, आपने comprehension passage को attempt करना है. ठीक है. उसके बाद you have recently started in the academy, so this is I think your first day in the academy, or have you taken any other class of any other subject? Okay, good. So you have taken classes. For some of you, it's the first day, and then some of you also have taken some other classes. ठीक है, चलें. उसके बाद देखें, ज़हन में रखें, when it comes to this particular paper, English precise and composition, ज़हन में आपने रखना है कि it's a paper which is a compulsory paper, और इस पेपर में you need to your English language skills will be tested. अच्छा, असद ने कहा है we are in touch since 18. Asadullah, will it be your second or third attempt, or will it be your first attempt? अच्छा Asadullah, so this is your first attempt. ठीक है. Is the screen visible? Can you see the screen? Okay. Well, let me introduce myself. I'm Dr. Naveed, and I've been taking these preparatory classes for English precise and composition for quite a long time now, and I've been a part of NOVA for around quite a long time now. और जो specific subject है, the subject
which I deal is this English precise and composition. जिस तरह के आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि दिस इज द सिलेबस ऑफ इंग्लिश प्रिसाइज एंड कॉम्पोजिशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे और फिर सिलेबस में जो पार्ट्स है रिलेटेड टू द टेस्टिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स उसको हम डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद देन वी विल प्रोसीड। वेल, नॉर्मली वी यूज्ड टू cover this paper within 8 lectures, but now from this time we have decided to take 10 lectures for this particular subject. Why? Because within 10 lectures what we observed or what we experienced is कि 8 lectures में mostly students को मुश्किल होती है समझने में। And then, well, Amara is asking about my educational background. Amara, I have my PhD in linguistics, and this is what my introduction is. I'm Dr. Naveed. So can I start with the discussion of the syllabus? Okay. अच्छा, अब इस तरह है because it's the online mode. ऑनलाइन मोड में हमने थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनानी है। अंडरस्टैंडिंग इस तरह है कि whenever I start discussing something, so you don't need to ask question in the middle because mostly you will have to ask question in the chat box, and then whenever I am discussing, so I mostly close the chat box. अब मैं इस तरह करूंगा कि whenever I start discussing something, you need to observe. You need to then, take points, and then you also need to keep your questions whenever I discuss something. तो उसके बाद I will give you time for your questions, for your clarification, and then we will have discussion about certain things. ठीक है, अभी सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं और प्लीज कीप इट इन माइंड, जो आपका CSS competitive एग्जाम है और एनी competitive एग्जाम में बी PMS और CSS और PMS बलोचिस्तान और जितनी भी रीजन्स में ये competitive एग्जाम्स होते हैं, about some are compulsory subjects and then about some are optional subjects. Optional subjects depend upon your choices कि कौन से subjects आप उसमें take करते हैं 100 marks के, और then you need to then select from different groups. When it comes to the compulsory subjects में as I deal with the English part of the compulsory subject, so English part में you have paper compulsory of English essays or essay writing. So that is a different subject of 100 marks, whereas this particular paper, that is English precise and composition, ये भी आपका compulsory 100 marks का एक पेपर है। अब सबसे पहले आपने ये जहन में रखना है, as you have come for preparation, students normally coming for preparation, all of them have their graduation, all of them have their undergraduate degree, that is BS degree, which means that they already have the required language skills, English language skills I am talking about. इस पेपर में आपके English language skills test होंगे, ठीक है? So this paper is related to the testing of English language skills. Yes, we do have questions, but we do not have any specific topic. What I mean by saying is कि इस पेपर की प्रिपरेशन में हमारे पास टॉपिक्स नहीं है जो हमने प्रिपेयर करने हैं, रादर वी नीड टू डिस्कस द क्वेश्चंस एंड रिक्वायर्ड लैंग्वेज स्किल्स फॉर अटेम्प्टिंग दैट क्वेश्चन, वी विल बी डिस्कसिंग दैट, राइट? तो इस पेपर में प्लीज जहन में रखें कि व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश प्रिसाइज एंड कॉम्पोजिशन, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, एज it's a test of your English language skills. So then what you require is that you need to understand what are the technicalities involved in attempting question in this particular paper, and along with the technicalities you need to also understand how to attempt a particular question so that you can have maximum chances of getting marks in this particular paper. आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि इस पेपर में इंग्लिश प्रिसाइज एंड कॉम्पोजिशन में एज एवरेज इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते। वो क्यों नहीं आते? यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड ऑफ इट। वो सिर्फ इसलिए नहीं आते क्योंकि सबसे पहले जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इस बात को समझने में थोड़ी सी कंफ्यूजन कर लेते हैं। दे अदर सब्जेक्ट्स में उनके पास एक
सिलेबस होता है, स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, वो स्पेसिफिक टॉपिक्स वो प्रिपेयर करते हैं, and then after preparing those specific topics, they either remember it or maybe in some cases cram those topics and then reproduce it. When it comes to this particular English precise and composition paper, so it does not require cramming, even it does not require reproducing किसको कहते हैं कि हम एक टॉपिक को, एक कंटेंट को किसी बुक से याद करके उसको अपने अल्फाज में रिप्रोड्यूस करते हैं. So when it comes to this particular paper, the case is different. In this particular paper, through different questions, your language skills, English language skills will be judged. अब ये हम टेक्निकली अभी इसको डिस्कस करेंगे. इस पेपर में your English language skills, कौन कौन से skills आपके टेस्ट होंगे. Your vocabulary in English language means vocabulary skills in English language will be tested. उसके बाद your understanding of English grammar will be tested in this particular paper, and then your writing skills with reference to guided writing will also be tested in this particular paper. तो जब हम इस पेपर की प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो इस पेपर के लिए जब आपने प्रिपेयर करना है, सो यू नीड टू हैव अ प्रैक्टिस इन 3 डिफरेंट डायमेंशंस विद रेफरेंस टू इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स. 3 डिफरेंट डायमेंशंस क्या है? एज यू कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर सिलेबस. उस सिलेबस को मैं फिर डिस्कस करता हूं. लेट मी ओपन ए ब्लैंक शीट एंड okay, is the blank sheet visible to all of you? Okay, अब देखें, it's a compulsory paper. Please observe. In total marks of the paper is 100. It's a 100 marks paper. अब इस 100 marks paper को जब आपने प्रिपेयर करना है, तो इसमें से मार्क्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं in 3 different areas in English. You will be tested for your vocabulary in English. अब it means you need to memorize vocabulary. वोकेबलरी इन इंग्लिश के आपके क्वेश्चंस आएंगे 30 मार्क्स के. 30 मार्क्स आपकी वोकेबलरी इन इंग्लिश. अब ये इसमें आपने किस किस किस्म की वोकेबलरी जो है वो आपने मेमोराइज करनी है. फॉर एग्जांपल, यू नीड टू मेमोराइज you need to memorize synonyms and antonyms. Please keep it in mind कि आपने synonyms और antonyms आपने याद करने हैं. उसके बाद you need to memorize pair of words, you need to memorize idioms, you also need to memorize phrasal verbs. ये कुछ vocabulary के sections हैं जिसके 30 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आते हैं. इस 30 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव सेक्शन का. आपको पता होना चाहिए कि ये पेपर 2 सेक्शन में होगा, ऑब्जेक्टिव सेक्शन एंड सब्जेक्टिव सेक्शन. ऑब्जेक्टिव सेक्शन इज ऑफ 20 मार्क्स एंड सब्जेक्टिव सेक्शन इज ऑफ 80 मार्क्स. ऑब्जेक्टिव सेक्शन के जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो वोकैबुलरी से आते हैं. और वो किन वोकैबुलरी से आते हैं? कैन समबडी टेल मी? सिनोनिम एंड एंटोनिम, जिसको हम वर्ड एनालॉजी एक्सरसाइजेस कहते हैं. सिनोनिम एंड एंटोनिम. हैव यू लिसनड इट? कि जो आपके ऑब्जेक्टिव सेक्शन में 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, वो जो आपको ऑब्जेक्टिव सेक्शन कुछ टाइम के लिए दिया जाएगा एंड इट विल बी फॉर 20 मार्क्स. और 20 मार्क्स आपके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम, जिसको हम टेक्निकली कहते हैं वर्ड एनालॉजी. Right? Then along with this 20 marks objective section, which is exclusively based on the memorization of vocabulary, आपके subjective part में एक 10 marks का question आएगा. और वो 10 marks का question जो है
that will be given to you, और इस 10 मार्क के क्वेश्चन में you will have to make meaningful sentences, कुछ वर्ड्स आपको दिए होंगे, ठीक है। और वो वर्ड्स जो है that can be from different lists. Different lists कौन कौन से हैं? You can either be given pair of words, you can either be given idioms, right? You can either be given phrasal verbs. ये 3 मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज है जिसमें से आपको एक सब्जेक्टिव पार्ट में 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा, एंड दैट इज आल्सो रिलेटेड टू वोकैबुलरी। व्हेनेवर यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर दिस 30 मार्क्स, इस 30 मार्क्स की प्रिपरेशन जो है इट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन योर वोकैबुलरी मेमोराइजेशन। आपने जहन में रखना है कि जब आप इन 30 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, सो बेसिकली these 30 मार्क्स आर डिपेंडेंट ऑन वोकैबुलरी मेमोराइजेशन। के मतलब आपने कुछ वर्ड्स लिस्ट से जो है वोकैबुलरी आपने याद करनी है, आपने कुछ सिनोनिम एंटोनिम के वर्ड लिस्ट से वोकैबुलरी याद करनी है, क्योंकि वो 20 मार्क्स के का क्वेश्चन आएगा उस पे। लाइकवाइज आपने पेयर ऑफ वर्ड्स याद करने हैं, आपने ईडियम्स याद करने हैं, और आपने कुछ फ्रेजल वर्ब्स याद करने हैं। फ्रेजल वर्ब्स आर नॉट कमिंग वेरी फ्रीक्वेंटली, बट फ्रॉम पेपर टू पेपर यू आर बेसिकली गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, और ईडियम्स। अगर हम अभी 2022 के पेपर की बात करते हैं, हैज एनी वन ऑफ यू सीन दिस 2022 इंग्लिश प्रिसाइज एंड कॉम्पोजिशन पेपर? आप में से किसी ने देखा है वो? ठीक है, मैं फिर वो आपको पेपर दिखाता भी हूं, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो सबसे पहले जब इस 100 मार्क्स के लिए आप प्रिपेयर करेंगे तो आपने वोकैबुलरी मेमोराइज करनी है। Means one part of the preparation for this particular paper is memorization, and that memorization is memorization vocabulary, right? English vocabulary memorization. क्या आप में से कोई vocabulary memorize कर रहा है? vocabulary memorization, इंग्लिश के कुछ अल्फाज आप मेमोराइज कर रहे हैं? Has anybody started this practice of memorizing words? Okay, ठीक है, शीरीन हैज रिटन फ्रॉम डॉन न्यूज़पेपर, ठीक है, गुड। देखें, एक मैं आपको थोड़ा सा बताऊं फॉर योर ओन गाइडेंस। आपको your instructors, your maybe if people those who already have attempted Nayab, I will come to this question, GRE word list, right? ये word list को मैं फिर बाद में डिस्कस करता हूं, कौन से लिस्ट से हमने मेमोराइज करना है, ठीक है, that I will also clarify। क्योंकि टुडे इज आवर ओरिएंटेशन क्लास, तो मैं चाहता हूं कि आपको इस पेपर के पूरा आपको पता चले कि है क्या, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, और उसको हमने प्रिपेयर किस तरह करना है। अभी फिलहाल हमने ये डिस्कस किया है कि इस पेपर में आपके पास जो है 30 मार्क्स के वोकैबुलरी आइटम्स आएंगे, जिसमें से आपका 20 मार्क्स सिनोनिम्स एंड एंटोनिम। इसका मतलब है कि वी नीड टू हैव ए गुड लिस्ट ऑफ सिनोनिम एंड एंटोनिम्स फ्रॉम व्हिच वी कैन मेमोराइज। along with that, you need to also memorize from pair of words list. You also need to memorize idioms from idiom word list, and then you also need to go for the phrasal verbs, right? Phrasal verbs अगर आप याद नहीं भी करते इतने ज्यादा, लेकिन you need to memorize idioms and pair of words, because in one paper pair of words come, the other idioms comes, and these two categories come frequently. अब देखें, जब आपने प्रिपरेशन शुरू की है फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम फॉर CSS और PMS, तो आपको आपके टीचर्स ने या मे बी जिन्होंने पहले अटेम्प्ट किया है उन्होंने बताया होगा कि स्टार्ट बुक रीडिंग, सॉरी न्यूज़पेपर रीडिंग। और जब आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो वहां से आप जो है वोकैबुलरी सीखते हैं, राइट? अब जहन में रखें कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और पेपर को पढ़ रहे हैं बिकॉज यू वांट टू मेमोराइज वर्ड्स, जो न्यूज़पेपर से आप अल्फाज पढ़ रहे हैं और जो उससे मेमोराइज कर रहे हैं, वो वाले अल्फाज विल हेल्प यू इन एसे राइटिंग, विल हेल्प यू इन राइटिंग, विल हेल्प यू in writing in English. But when it comes to this particular paper, whereupon you are required to memorize words from certain categories,
इन कैटेगरीज के लिए आपने ये जो वर्ड मेमोराइज करने हैं, तो आपने इसको मेमोराइज करना है वर्ड लिस्ट से। आपके पास एक अच्छी सिनोनिम एंड एंटोनिम की वर्ड लिस्ट हो, जिस तरह से नायाब ने कहा जीआरई वर्ड लिस्ट, लेट मी टेल यू जीआरई वर्ड लिस्ट इज द स्टैंडर्ड लिस्ट। अगर आपके पास जीआरई वर्ड लिस्ट है, वो एक स्टैंडर्ड वर्ड लिस्ट है, और उससे आप अल्फाज याद करें, तो दैट इज द बेस्ट रिसोर्स फ्रॉम विच यू कैन मेमोराइज, राइट। शाजिया, आई विल कम टू इट कि कितने आपने याद करने हैं, ठीक है। लेकिन जो जीआरई की वर्ड लिस्ट है उसमें मुख्तलिफ किस्म की लिस्ट हैं। उसमें आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं, उसमें आपके पास हॉट प्रोस्पेक्ट वर्ड्स हैं, फिर उसमें आपके पास सिनोनिम एंड एंटोनिम्स जो है उसकी वर्ड लिस्ट है, ठीक है। आपने अगर इस पर्टिकुलर पेपर के लिए, इफ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर, you need to memorize words from these three basic list. Words from synonym and antonym जो आप GRE की भी यूज कर सकते हैं, लेकिन GRE की word list is a very general and standard list. It is not totally based and focused on competitive exams, means the CSS and PMS. इसीलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूं कि you need to take a good list of synonyms and antonyms which is based on the previous papers, CSS papers. Around 15 years, 20 years जो पिछले पेपर हैं उन पे एक लिस्ट जो है डेवलप हुई हो, and then some other potential words also. So you need to have a word list which is specifically designed and made for the purpose of preparation for this particular paper, that is English precise and composition. तो आपने synonym and antonym की एक लिस्ट जो है उससे याद करना है। उसके बाद you need to have pair of words. Pair of words you can find in any good grammar book. You can even have separate books for pair of words, words list of pair of words, right? लेकिन अगेन मैं एडवाइस करूंगा कि कोई ऐसी पेयर ऑफ वर्ड की लिस्ट हो दैट इज फोकस्ड ऑन द प्रीवियस पेपर्स, previous CSS papers, and that is focused on the CSS papers, right? Then Sana, I'll also come to the list. मेरे पास बिल्कुल लिस्ट है, वो मैं आपको शेयर करूंगा। And then idioms. Idioms आप कहीं से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगेन आई विल एडवाइज यू बिकॉज यू नीड टू हैव फोकस्ड काइंड ऑफ प्रिपरेशन। देखें, प्लीज कीप इट इन माइंड when it comes to competitive exam and particularly to CSS, preparation matters, but along with preparation you need to know about the techniques for preparing for a particular paper, right? Now अब टेक्निक्स क्या है कि जब हम इस प्रिसाइज और कॉम्पोजिशन, इंग्लिश प्रिसाइज एंड कॉम्पोजिशन की हम बात करते हैं इस पेपर की, तो हमने जो प्रिपरेशन करनी है, देयर हैज टू बी टोटली फोकस्ड। Means we don't need to go for general word list, we don't need to go for general vocabulary list, rather we need to have specific lists and specific kind of exercises that have come in the previous papers and that will also come maybe in future, so that we can prepare from it in a very targeted manner, so that we may not have general type of preparation going on, ठीक है। तो जब भी आप vocabulary prepare करें इस पेपर के लिए, सो यू नीड टू प्रिपेयर ये 3 वोकैबुलरी जो है आप अपने पास लिस्ट जहन में रखें, याद रखें कि यू नीड टू प्रिपेयर पेयर ऑफ वर्ड्स, यू नीड टू प्रिपेयर इडियम्स, यू नीड टू प्रिपेयर सिनोनिम एंड एंटोनिम। सिनोनिम एंड एंटोनिम की लिस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि यू विल हैव ऑब्जेक्टिव सेक्शन ऑफ 20 मार्क्स एक्सक्लूसिवली कमिंग ऑन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। और उसके बाद जो पेयर ऑफ वर्ड्स है और इडियम्स है, तो ये 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा, कभी आपको ये पेयर ऑफ वर्ड्स देंगे और किसी टाइम ये आपको जो है इडियम्स देंगे, तो आपके पास वो लिस्ट होनी चाहिए। अब व्हाट आई डू बेसिकली इज, देखें, इट्स अ प्रिपरेशन एंड देन दीज डेज एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, एनीबडी कैन यूज एनी लिस्ट, लेकिन उस लिस्ट को आपने सेलेक्ट करते हुए जहन में रखना है कि that list is specifically for the preparation of CSS, right? That list is, basically for the preparation of CSS.
Yes, Dr. Ali, is it fine now? Can you see it now? Okay. Up. Uh, I have I have a list of synonyms and antonyms that include around 500 words, synonyms and antonyms, and that is totally focused on CSS papers. For your ease, I will share that list with you. And then again, I'm saying that I do not limit you only to preparing, or I do not limit you to only prepare from the list that I gave you. लेकिन अगर किसी को मुश्किल हो रही है कोई वर्ड सिनोनिम एंड एंटोनिम की लिस्ट फाइंड आउट करने में, सो आई ऑलरेडी हैव अ लिस्ट विद मी, आप उससे प्रिपेयर कर सकते हैं. आप उससे जब प्रिपेयर करेंगे 500 वर्ड्स अराउंड लिस्ट, if you can prepare maximum of it, so then the chances are that you can be able to attempt this 20 marks objective question that comes on synonym and antonym in a proper manner. उसके बाद आप पेयर ऑफ वर्ड्स की एक लिस्ट होनी चाहिए जो कि मेरे पास है, और जो मैं वर्क टाइम टू टाइम also I also update it, and that CSS word list is also basically focused on CSS. वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा. और उसके साथ साथ I also have a list of idioms. ठीक है, the idioms that come in CSS paper जो previous papers में आए हैं, और फिर उसके बाद some other potential idioms that can also come in future. तो एक लिस्ट, ये 3 किस्म की लिस्ट मेरे पास है which I will share with you today. And then after sharing it, आपने सबसे पहले इस पेपर को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि you need to straight away start with the memorization of the vocabulary. क्योंकि vocabulary memorization पे आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इस पेपर में, 30 मार्क्स के क्वेश्चन है. यस, नायाब जो लिस्ट है वो प्रीवियस, जो मैं सिनोनिम और एंटोनिम की बात करूं, सो दैट इज बेस्ड ऑन प्रीवियस 10 to 15 years पेपर्स. इस तरह से जो पेयर ऑफ वर्ड्स है, इस तरह से जो इडियम्स हैं, and the list that I will give you, even these lists are available online also, लेकिन क्योंकि मेरे पास है, so I will share it with you. दूसरा, आपको पता होगा कि these days there are different forums for competitive exams, the e-forums I'm talking about. और उस e-forums में भी से भी आपको मुख्तलिफ किस्म की लिस्ट मिल सकती है. लेकिन एनी हाउ, वही वाली बात है कि आपके पास एक लिस्ट हो, ऑथेंटिक लिस्ट हो, that is based on previous papers, उसमें से जो लफ्ज हैं, जो अल्फाज हैं, वो previous papers में आए हो, and then some other potential words that can also come in the coming paper. उससे आपने मेमोराइज करना है. Okay, अब I will answer your question, Nayab, and then someone also has asked me कि हमने कितने जो है लफ्ज याद करने हैं. शाइस्ता also has asked this question. I'm coming to this question. सबसे पहले मुझे बताएं कि have I been able to communicate कि जो 100 मार्क्स हैं उसमें 30 मार्क्स क्वेश्चन आपके vocabulary memorization पे बेस्ड है. Have you understood this point? ठीक है, गुड गुड, वेरी गुड. उसके बाद द सेकंड इज, जो हमने वोकैबुलरी मेमोराइज करनी है, जो आपने वोकैबुलरी मेमोराइज करनी है, दैट वोकैबुलरी मेमोराइजेशन हैज टू बी बेस्ड ऑन 3 lists: synonym, antonyms, pair of words and idioms. ठीक है. उसके बाद जो सिनोनिम एंटोनिम है, ऑब्जेक्टिव का 20 मार्क्स का पूरा सेक्शन सिनोनिम और एंटोनिम पे बेस होगा. ठीक है. उसके बाद आपका एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा जिसमें दिस टाइम पेयर ऑफ वर्ड्स हैव कम, अदर टाइम मे बी इडियम्स कम, तो आपने इडियम्स भी प्रिपेयर करने हैं, आपने पेयर ऑफ वर्ड्स भी प्रिपेयर करने हैं. अब जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और द थिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये जो पेपर है, इस पेपर के लिए whenever you will prepare, you will have to divide your preparation into 3 parts. How you have to divide your preparation into 3 parts? One part is memorizing vocabulary. जो vocabulary की memorization है, please keep it in mind, and I always advise it to the students in the first class from the very first day
कि जो वोकैबुलरी मेमोराइजेशन है, इट कैन नेवर बी डन इन दिस वे कि एक दिन, 2 दिन या एक हफ्ता में बैठ के सारी लिस्टों से अल्फाज याद करूं, वो इस तरह से नहीं हो सकते। आपने क्या करना है कि यू नीड टू मेमोराइज सम वर्ड्स ईच डे, हर दिन आपने कुछ अल्फाज याद करने हैं। एंटिल द टाइम ऑफ योर एग्जाम ये आपने वोकैबुलरी मेमोराइजेशन की प्रैक्टिस आपने छोड़नी नहीं है, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन योर ओन एप्टीट्यूड, how much you can memorize vocabulary, I'm talking about how much vocabulary you can memorize in a day, that depends. What I know about is that 3 to 5 words, either 3, 4 or 5 words, don't go for more than 5 words each day, ठीक है। if some of you can have that aptitude of memorizing more than 5 each day, so okay, it depends because it is something subjective, जितना आप याद कर सकते हैं, लेकिन हर रोज मिनिमम आपने कम से कम 3-4 अल्फाज आपने याद करने हैं फ्रॉम ईच लिस्ट। यानी फॉर एग्जांपल आई हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर, तो मैंने क्या करना है कि आज से ही, या मैं आज आपको लिस्ट जो है शेयर कर दूं, या आपके पास पहले से कोई लिस्ट मौजूद है, या जो लिस्ट मैं आपको शेयर करूं। फॉर एग्जांपल, अब लेट्स सपोज आई एम फॉर एग्जांपल I am also a candidate like you, तो मैंने क्या करना है कि once I receive the list, or once the list that I have, I need to start preparing 3 to 5 words each day from each list. 3 to 5 synonym की लिस्ट से मैंने याद करना है, likewise 3 to 5 antonym की लिस्ट से याद करना है, 3 to 5 pair of words से, 3 to 5 idiom से, ठीक है। अगर मेरे लिए डिफिकल्टी हो रही है ईच डे प्रिपेयरिंग वर्ड्स फ्रॉम ईच लिस्ट, सो आई कैन देन डिवाइड। आज मैंने फॉर एग्जांपल 5 वर्ड्स याद किए हैं सिनोनिम और एंटोनिम से, कल मैंने 5 वर्ड्स याद किए हैं फॉर एग्जांपल पेयर ऑफ वर्ड्स से, परसों मैंने याद किए हैं लेट्स सपोज 5 वर्ड्स फ्रॉम 5 वर्ड्स फ्रॉम इडियम्स। अब प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या है? देखें, जब भी आप whenever you memorize vocabulary, vocabulary memorization का मतलब ये नहीं है कि एक लफ्ज मैंने देख लिया है और उसका जो मीनिंग है उसको मैंने रट लिया है। I don't need to cram, I have seen a word, I have seen the meaning of it, I need to memorize. Memorization कहते हैं whenever you try to remember something with meaning, you try to remember something meaningfully. अब मैंने एक लफ्ज को याद किया है, उसका मीनिंग याद किया है, whenever I will be going through my memorization, word का मीनिंग देखने के बाद I need to also go through the sentence in which it is used, so that I also know the use of the word, right? उसके बाद whenever I come to know the use of the word, and for retaining that vocabulary, I need to start using it. I need to start using it while practicing writing, maybe in essay, maybe for this paper, मैंने वो लफ्ज यूज करने हैं। उसके साथ आजकल क्योंकि आपको पता है कि we are multilinguals, तो इवन अगर हम किसी भी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, so we can use English words, ठीक है। So why not to use those words which I have memorized for this particular paper? Why not to make it a part of my speech? मैं उर्दू में बात कर रहा हूं तो वो लफ्ज यूज कर रहा हूं। जब आप लफ्ज यूज करेंगे तो that is the strategy with which you are memorizing, and then after 1 or 2, 3 days, whenever if you have used a word frequently in your speech, what will become? It will become a part of your vocabulary. So this is how it is. कभी भी vocabulary प्रिपेयर करते हुए इसको इस तरह प्रिपेयर ना करें कि आपने सिर्फ लफ्ज देखकर मीनिंग देखकर आप मीनिंग को याद कर रहे हैं। नहीं, आपने मीनिंग देखा है, जहन में आपकी मीनिंग बैठ गया है, then you need to write a sentence and use that word in your sentence. उसके बाद, as it may not be possible to write sentences whole day long, so then you what you do, you start using it in your speech. किसी से आप बात कर रहे हैं तो उस लफ्ज को आप अपनी बातों में यूज करें, ठीक है। So this is how you need to retain, and then आपके पास जो लिस्ट होगा, as for example I've started list from the start, पहले 5 अल्फाज मैंने किए हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद then after 2 or 3 days, not more than 3 days, please keep it in mind, after 3 days gap I need to take a test of whatever I have memorized previously.
ताकि अगर उसमें से जो मैंने फॉर एग्जांपल आज 3 लफ्ज याद किए हैं, 5 फॉर एग्जांपल, और मैं थर्सडे को उसका टेस्ट अपने आप से ले रहा हूं, तो आई कम टू नो कि हाउ मच आई हैव रिटेन। और जब आप आफ्टर 3 डेज, प्लीज कीप इट इन माइंड, नॉट मोर देन 3 डेज, क्योंकि ये एक टेक्निकल सी बात है कि मोर देन 3 डेज फिर हमसे चीजें भूल जाती हैं। सो एट द एंड ऑफ आफ्टर 3 डेज, सो देन आई नीड टू टेक अ टेस्ट। वो लिस्ट मैंने उठा के सिर्फ उसको देखना है, और उसको देखते हुए मीनिंग मेरे जहन में आएगा। जिसकी मीनिंग मेरे जहन में नहीं आ रहा, इट मींस आई हैव नॉट बीन एबल टू memorize that particular word. So this is how you need to memorize. And the basic thing is कि आपको ये पता हो कि for preparing this particular paper you need to memorize vocabulary. अब जो मैं आपको strategies बता रहा हूँ, these are some strategies, लेकिन it also depends upon your own aptitude. आप में से कुछ जो है वो ज्यादा लफ्ज रिटेन कर सकते हैं, कुछ जो है कम कर सकते हैं, लेकिन आप सब ने एक प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू रखनी है, एंड दैट प्रैक्टिस इज दैट यू नीड टू कीप दिस प्रैक्टिस ऑफ मेमोराइजिंग वर्ड्स कंटिन्यूअसली। ठीक है, ये आपने इस तरह नहीं जहन में रखना कि जब पेपर का 1 महीना रह जाएगा तो तब मैं वोकैबुलरी लिस्ट से जो है मेमोराइज करूंगा, वो कभी भी नहीं हो सकेगा। एंड देन यू विल बी इन कंफ्यूजन, बिकॉज वोकैबुलरी is an ongoing preparation. Vocabulary is an ongoing memorization process which you need to have continued till the time of your paper. ठीक है, दूसरा जैसे मैंने आपको कहा है कि न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर से जो आप लफ्ज याद कर रहे हैं वो अल्फाज आपको आपकी राइटिंग में हेल्प देंगे, लेकिन उन अल्फाज से इन जो एक्सरसाइजेस हैं इसमें नेसेसरीली लफ्ज नहीं आएंगे, बल्कि इन एक्सरसाइजेस के लिए आपके अपने वोकैबुलरी कैटेगरीज है, दैट इज सिनोनिम, दैट इज एंटोनिम, दैट इज पेयर ऑफ वर्ड्स, एंड दैट इज idioms. So preparing for this paper, as I said, that you need to have preparation in 3 parts. One part is that preparing from a vocabulary list, means memorization of vocabulary, because the memorization of vocabulary is of 30 marks in this particular paper of 100 marks. Memorization of vocabulary का point आपने understand कर लिया है? Have you been able to understand what is the meaning and for which reason we are discussing it, vocabulary memorization? Part of your preparation. The second part of your preparation is related to guided writing skills. Guided writing skills के आपके इस पर्टिकुलर पेपर में 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। Guided writing skills. Now what is the meaning of guided writing skills? देखें, one is writing skills, your English writing skill, the general English writing skill, right? Other one is writing with reference to particular situation, यानी with reference to particular situation। अभी मैं आपसे सिर्फ 1-2 क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताएं इसमें से कौन सा सिचुएशन जो है इसमें आपने जनरल राइटिंग स्किल्स यूज करनी है, और कौन से सिचुएशन में आपने गाइडेड राइटिंग स्किल्स यूज करनी है। फॉर एग्जांपल सिचुएशन नंबर 1, प्लीज लिसन। लेट्स सपोज आई आस्क यू, राइट समथिंग अबाउट योरसेल्फ, write something about yourself. This is situation number 1. Situation number 2 is write a letter to the newspaper editor. Write a letter to the newspaper editor. In those situations में, in which situation you are required to have general writing skills? Very good, Salman has said, have understood कि जो पहला सिचुएशन है उसमें जनरल राइटिंग स्किल्स है। जनरल राइटिंग स्किल्स का मतलब क्या है
कि आपको किसी किस्म की ऐसी सिचुएशन नहीं दी और आपने जो लिखना है वो सिचुएशन बेस्ड राइटिंग नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इफ समबडी आस्क यू टू राइट ए न्यूज़पेपर टू द एडिटर, सो ये सेकंड सिचुएशन क्या है? इज इट जनरल राइटिंग और इज इट गाइडेड? गाइडेड राइटिंग। सो मेरा गुड। अब देखें गाइडेड राइटिंग क्यों है? क्योंकि जो सेकंड सिचुएशन है उसमें आपने सिर्फ लिखना नहीं है, बल्कि उसमें आपने the guidelines need to know, you need to know about how a letter is writing, has to be written, what is the structure of writing a letter। देखिए guided writing। तो इसी तरह जो आपके पार्ट 2 है प्रिपरेशन का, फॉर प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर, सो द पार्ट 2 डील्स विद गाइडेड राइटिंग स्किल्स। अब गाइडेड राइटिंग स्किल्स में आपने किस किस्म की सिचुएशंस में लिखना है? नंबर 1, you will be given 20 marks question for Prezi writing, right? And then you will also be given 20 marks question for attempting a reading comprehension exercise। ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पेपर में जो गाइडेड राइटिंग है उसमें आपको दो सिचुएशंस दिए जाएंगे। यू विल बी गिवन ए क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स वेयर यू विल हैव टू राइट ए प्रेसी, मींस यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू राइट इन ए जनरल मैनर, या रादर यू विल बी आस्क्ड टू राइट ए प्रेसी। अब प्रेसी क्या है, प्रेसी को किस तरह लिखते हैं, प्रेसी की क्या टेक्निक है, उसमें क्या टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है, you know, all these we will discuss with practice and then also with your question and answer। so you know we will discuss के ये किस किस्म की guided writing है। उसके बाद you will be given 20 marks question for attempting a reading comprehension exercise। अब reading comprehension exercise किस किस्म की guided writing है? where you will be required to write the answer of the question on the basis of the content given in the passage। so you know guided writing। तो जब आप इस पेपर के लिए प्रिपेयर करेंगे, सेकेंड पार्ट ऑफ प्रिपेयरिंग दिस पेपर इज टू यू नो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर गाइडेड राइटिंग। अब जिस तरह हमने डिस्कस किया कि वोकैबुलरी पार्ट 1, उसके लिए हमने प्रिपेयर किस तरह करना है, वी नीड टू मेमोराइज वोकैबुलरी, उसके लिए मेमोराइजेशन है। अब हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस पार्ट 2 गाइडेड राइटिंग स्किल्स। सो इसके लिए आपने प्रिपेयर किस तरह करना है? नंबर 1, यू नीड टू नो द टेक्निक्स ऑफ दीज गाइडेड राइटिंग, देन उसके साथ प्लस यू नीड टू स्टार्ट practicing you need to start practicing by attempting these exercises from the previous papers राइट। सो बाय एंड लार्ज अगर मैं कहूं कि इसको आपने प्रिपेयर किस तरह करना है गाइडेड राइटिंग को, सो दिस बेसिकली इज प्रैक्टिसिंग राइटिंग स्किल्स। अच्छा, अब सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन इज आपने प्रैक्टिस करनी है गाइडेड राइटिंग की। गाइडेड राइटिंग के लिए आपने अपने आप को प्रिपेयर किस तरह करना है? सबसे पहले आपको टेक्निक्स का पता हो इन गाइडेड राइटिंग एक्टिविटीज का,
कि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू राइट ए प्रेसी किसको कहते हैं, टेक्निक्स क्या है, पढ़ना किस तरह है, इंफॉर्मेशन हमने किस तरह एक्सट्रैक्ट करनी है, फिर उस इंफॉर्मेशन को हमने लिखना किस स्ट्रक्चर में है, उस इंफॉर्मेशन को हमने लिखना किस लेआउट में है। Likewise, the same goes for passage comprehension कि what is a passage comprehension. उसके बाद passage comprehension में if I have to write the answer of the question, so then how many different types of questions can be there? For different types of questions, how will we take information from the passage, and then in which language, in which structure, in which format we will have to answer. This is one part कि सबसे पहले आपको टेक्निक्स का पता हो, और उसके बाद आपने इसको प्रिपेयर इस तरह करना है कि वंस यू नो अबाउट द टेक्निक ऑफ प्रेसी राइटिंग एंड यू नो अबाउट द टेक्निक ऑफ अटेम्प्टिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, यू नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। अब स्टार्ट प्रैक्टिसिंग में जहन में रखें, या तो आप जनरल किस्म की एक्सरसाइजेज लें और यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग हाउ टू राइट ए प्रेसी, दैट इज ऑल्सो गुड, बट व्हेनेवर यू कम टू नो अबाउट the techniques of presi writing or the technique of attempting a passage comprehension, the questions in a passage comprehension exercise, फिर उसके बाद you need to attempt exercises from the previous papers. मैं क्या करता हूं कि for preparation what I usually do is that I practice these guided writing exercises from the previous 5 years papers, right? Now as this year paper has also come, that is 2022, तो हम यहाँ पे क्लास में क्या करेंगे, starting from previous 5 year papers हम 2022 के इस guided writing exercises को attempt करेंगे, discuss करेंगे, passage comprehension and then presi. Likewise the same we will do for 2021, 2020, 2019, 2018, 5 years papers, ठीक है। लेकिन जो मैं आपको एडवाइस करूंगा, ये जब हम 5 years पेपर्स को डिस्कस करेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग द टेक्निक्स ऑफ दीज एक्सरसाइजेस एंड नोइंग अबाउट द स्ट्रेटजीज ऑफ अटेम्प्टिंग दीज एक्सरसाइजेस, उसके बाद जब आप प्रिपेयर करेंगे, सो आई विल एडवाइज यू टू गो 5 years फर्दर बैक, जो उसके बाद 5 years के और पेपर है उसको आप अटेम्प्ट करें। अब whenever you will have to prepare for this particular part of the paper, 40 marks, you need to have a book, and that book needs to have the previous papers, and then that book needs to have the solution of the exercises of the previous papers, right? ताकि जब आप प्रेसी को अटेम्प्ट करें, खुद लिखें, फिर उसको सोल्यूशन के साथ देखें और अंडरस्टैंड करें कि किस तरह लिखा जाता है, क्योंकि we only will discuss it for 10 lectures, और फिर उसके बाद आपने क्योंकि प्रिपेयर करना है एंड यू विल हैव टू अपीयर इन CSS इन द नेक्स्ट ईयर, तो उस वक्त तक आपने जो है प्रैक्टिस लेके चलनी है। यानी फॉर एग्जांपल जब व्हेनेवर वी फिनिश डिस्कसिंग डिफरेंट थिंग्स, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि आपने हर रोज कुछ अल्फाज याद करने हैं, इसी तरह इफ नॉट एवरी डे, एटलीस्ट ट्वाइस इन अ वीक आपने प्रैक्टिस बनानी है, कि ट्वाइस इन अ वीक आपने एक वीक में 2 प्रेसी के एक्सरसाइजेस अटेम्प्ट करके लिख के और फिर उसके बाद उसको मैनुअल के साथ चेक करना है, ठीक है। एंड देन वी मोस्टली आल्सो हैव द ट्यूटोरियल क्लासेस में हम राइटिंग, जो आप राइटिंग करते हैं उसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं, हम बता रहे होते हैं। शाइस्ता, देखें, none of you need to worry about anything, सब मेरे पास है, वो मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है। सो द बुक्स एंड मटेरियल्स, ये भी आज मैं आपको दिखाऊंगा, जो मैं आपको टाइम टू टाइम शेयर करूंगा। मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके लिए जितने भी हैंडआउट्स रिक्वायर है, आई हैव ऑल द हैंडआउट्स विद मी। लेकिन वही वाली बात है कि हैंडआउट्स कैन बी ऑफ सो मेनी डिफरेंट टाइप। आई हैव माय हैंडआउट्स, if people find it difficult to find handouts and books, you can only use these handouts, और अगर सिर्फ इस handout से भी आप प्रिपेयर करते हैं, you will have a very good preparation for this particular paper। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स भी हैं, अगर किसी के पास अपने एंड पे कुछ बुक्स हो तो वो बुक्स भी आप ले सकते हैं। हाँ, देखें, जिस तरह हमारा ने कहा कि she has a book of Nova, yes, the book of Nova is specific focused CSS book। देखें,
जहन में रखना है, आप सीएसएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप जो जिस मटेरियल से, जिस बुक से, जिस हैंड आउट से प्रिपेयर करें, दैट हैज टू बी फोकस्ड ऑन सीएसएस, ये जहन में रखना है। जनरल आपने चीजें नहीं लेनी, ठीक है। जिस तरह से हमने वोकैबुलरी की बात की, और वोकैबुलरी के लिए भी वो लिस्ट आपकी इस पे वो लिस्ट आपने जो है फोकस करनी है। आई विल कम टू द क्वेश्चन ऑफ इमरान, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल फिनिश व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और उसके बाद गाइडेड राइटिंग है, तो गाइडेड राइटिंग क्योंकि आपने अंडरस्टैंड करना है प्रेसी को, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करना है, तो आपने एक ऐसी बुक लेनी है या खरीदनी है, या जो बुक आपको मैं शेयर करूंगा, इफ यू यूज इट दैट इज फाइन, परफेक्टली फाइन, जिसमें से प्रीवियस पेपर्स हैं, प्रीवियस पेपर्स में जो प्रेसीज आए हैं, जो पैसेज कॉम्प्रिहेंशन आए हैं, उसको आपने अटेम्प्ट करना है, फिर उसी बुक में उसका सोल्यूशन है, लेकिन सोल्यूशन आपने बाद में देखना है अटेम्प्ट करने के बाद, सो दैट यू कम टू नो कि आपने अटेम्प्ट किस तरह किया है, कहाँ पे आपसे अटेम्प्ट में जो है मिस्टेक्स हुई है, किस तरह आप उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नाउ लेट मी कम टू योर क्वेश्चंस। देखें, yes, Hafiz Karim, that book is widely used, Sana, it's also a good one, right? शाहजेब, बिल्कुल। देखें, इसके बाद हमारे 9 लेक्चर्स और भी हैं, और मैं क्या करता हूं कि इन पूरे 9 लेक्चर्स में ये जो मैं आपको कह रहा हूं कि प्रीवियस 5 ईयर पेपर्स जो है स्टार्टिंग फ्रॉम 2022, ये हम सब प्रैक्टिस करेंगे। कुछ हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, कुछ मैं आपको एज असाइनमेंट दूंगा, एंड देन व्हेन वी विल हैव द नेक्स्ट क्लास यू विल सेंड मी, आई विल चेक इट एंड आई विल डिस्कस इट। फिर उसके बाद जो आपका ट्यूटोरियल होगा, और मोस्टली ट्यूटोरियल इज विद मी और विद एनी अदर टीचर, उसमें आप अपनी राइटिंग जो है लेके जाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देन इमरान हैज सेड, देखिए इमरान, रेन एंड मार्टिन की जो बुक है दैट इज ए ग्रामर बुक, उसमें भी आपके प्रेसी के टेक्निक है, आप बिल्कुल प्रेसी की टेक्निक उससे पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने प्रेसी के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेसी एंड पैसेज कॉम्प्रिहेंशन, यू नीड टू टेक ए बुक विच इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस पेपर्स, ठीक है। जो प्रीवियस पेपर्स के बेस्ड पे पेपर है, जो बुक है वो आपने लेनी है, सो दैट यू एक्चुअली प्रैक्टिस द एक्सरसाइजेस दैट हैव कम इन द प्रीवियस पेपर्स। बाकी रेन एंड मार्टिन की बुक विल हेल्प यू इन योर ग्रामर, जो कि एक द थर्ड पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन इज, आई एम कमिंग टू इट, ठीक है। ओके, देन देखें, एक आपने जहन में रखना है शाइस्ता, कि जब आप असाइनमेंट करते हैं डेली, सो देन इन द एकेडमी यू हैव पीपल फॉर असाइनमेंट चेकिंग, उनसे आप डेली के डेली चेक करवा सकते हैं असाइनमेंट्स। कुछ हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे और कुछ मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा, ठीक है। तो क्लास में हम पॉसिबली डिस्कस करेंगे, और साथ में जितनी असाइनमेंट्स मैं आपको क्लास में दूंगा वो आप करके लाएंगे, और मैं उसको चेक करूंगा विद इन द क्लास, एंड देन वी विल डिस्कस, ठीक है। बिकॉज इट्स ऑनलाइन मोड, because it's not a physical class, so we will also have to, we will also try to manage it. So क्लास में मैं जो असाइनमेंट्स दूंगा वो मैं डिस्कस करूंगा। जब आपका ट्यूटोरियल होगा, ट्यूटोरियल में आप कोई भी असाइनमेंट लिख के ला सकते हैं और चेक करा सकते हैं, ठीक है। ओके, अब नाउ लेट मी टॉक अबाउट ये जो पेपर है 100 मार्क्स का, उसमें सेकंड पार्ट ऑफ प्रिपरेशन इज रिलेटेड टू व्हाट? कैन समबडी टेल मी? Second part preparation is related to what? Can somebody tell me, so that at least I have the confirmation about your understanding? Writing or guided writing skills? Yes, Shazeb, guided writing skills, ठीक है। Please keep it in mind, writing skills नहीं, guided writing skills. Guided writing skills is a higher level, because writing skills is the basic level जो आपका होना चाहिए, जो आपकी इंप्रूव्ड होनी चाहिए। उसके बाद फॉर गाइडेड राइटिंग स्किल्स आपने प्रिपरेशन किस तरह करनी है? कैन समबडी टेल मी? फॉर गाइडेड राइटिंग स्किल्स हाउ विल यू प्रिपेयर? बाय प्रैक्टिस, वेरी गुड। देखें, बाय प्रैक्टिस,
आपने पहले पढ़ना है टेक्निक्स को, उसके बाद it has to be the practice. It has to be the practice. So the second part of yes, Sumaira, good. You know, the second part of your preparation is writing practice. Lekin writing practice with reference to guided writing, with reference to writing a précis, with reference to attempting a passage comprehension. So this is the second part of the preparation, right? Now, the third part of the preparation is that you need to have the understanding of English grammar, means you need to know about grammar rules. Grammar rules, you know, the questions are of 30 marks. 30 marks की question आपके, you will be tested for your knowledge of grammar. Or if I put it in this way, right? अब 30 marks में क्या है? For example, आपको पता भी है 10 marks question come for sentence correction, then 5 marks question punctuation exercise, then 5 marks preposition slash active and passive, and 10 marks translation. ये 30 marks के ये जो questions हैं, these will test you for your knowledge of English grammar. आपको इंग्लिश ग्रामर के रूल्स का पता हो, आपको 10 मार्क्स के सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिसमें से आपने यू नीड टू आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल मिस्टेक इन द सेंटेंस and then you need to correct that sentence. Likewise, you will be given a passage which you need to punctuate. You will be given, you know, an exercise of 5 marks. Mostly these days the exercise of preposition is given. Lekin, you know, if you go through the previous papers, in some of the papers, instead of giving you 5 marks preposition question, means you need to either write the preposition in the blank, right? In some of the papers, what happened that, you know, instead of preposition, they have given a passage which has to be converted into, you know, passive. Some active, you know, dialogues were given, dialogues in active voice, which the students and candidates were required to convert into passive. And then there is also a 10 marks translation exercise, right? Whereupon you will be given a passage in Urdu, which you will have to translate in English. So, you know, this is basically the grammar portion in this particular paper. 30 marks का आपका क्या है? Grammar portion है इसमें. अब tell me now how to prepare for this grammar portion. Now, once you want to prepare for the grammar portion, how this preparation has to be.
अब देखें, थर्ड पार्ट फॉर प्रिपेयरिंग फॉर दिस पेपर ऑफ 100 मार्क्स इज कि आपने रूल्स पढ़ने हैं ग्रामर बुक से रिलेटेड टू दीज डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस। उसके साथ आपने उन्हीं बुक से जो है एक्सरसाइज अटेम्प्ट करनी है ताकि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग में आए। और फिर उसके साथ जितने भी आपके प्रीवियस पेपर्स हैं, जिस तरह मैं कहता हूं कि पॉसिबली all of you need to attempt these exercises from the previous 10 years papers। मैं यूजुअली क्या करता हूं कि as I said कि 5 years जो पेपर्स हैं प्रीवियस, उसमें ये जितनी भी एक्सरसाइजेज आई हैं इसको मैं आपसे अटेम्प्ट कराऊंगा, फिर उन एक्सरसाइजेस को मैं डिस्कस करूंगा और हर एक क्वेश्चन में मैं फिर डिस्कस करूंगा कि किस किस्म की मिस्टेक है। और लाइकवाइज व्हेनेवर वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग दीज प्रीवियस एक्सरसाइजेस, तो उसी हिसाब से हम फिर उसमें से कुछ डिस्कशन भी करेंगे। एंड आई विल आल्सो टॉक अबाउट द रूल्स एंड सो मेनी डिफरेंट रूल्स। जब हम प्रीवियस पेपर्स से ये एक्सरसाइजेस अटेम्प्ट करेंगे तो टेक्निक क्या है कि हमें पता चलता है कि व्हाट डू वी हैव एनी पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स दैट कम which we need to focus and which we need to prepare। उससे हमें उसका भी अंदाजा होगा, उससे हमें डिफरेंट रूल्स का भी पता चलेगा। तो देखें, if I take the example of preparing for this particular part, so this particular part is again related to reading, rules from grammar and attempting exercises। तो this is your paper of 100 marks। 100 मार्क्स के जो ये पेपर है इंग्लिश प्रिसाइज एंड कॉम्पोजिशन, इसको जो आपने प्रिपेयर करना है तो प्रिपरेशन को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, एक पार्ट यू नीड टू memorize vocabulary which has to be a continuous ongoing process, then you need to have the understanding and then the practice of guided writing exercises from the previous paper, and then you need to start reading rules from grammar related to the grammar portion in this paper, and then you need to start attempting previous exercises and also exercises from different grammar book or different notes, right? So this is basically the whole picture of this paper of 100 marks, that is English precise and composition. And this is what you need to understand because these are preparatory classes. You need to know how to prepare for a particular subject, right? तो ये जो आपकी प्रिपरेशन है ये आपकी 3 पार्ट्स में होगी। हैव यू बीन एबल टू अंडरस्टैंड कि ये पेपर है किस चीज के बारे में और इसकी प्रिपरेशन की क्या रिक्वायरमेंट है? ठीक है, अच्छा, नाउ आई विल कम टू दिस क्वेश्चन ऑफ ग्रामर बुक। शाजेब हैज आस्क्ड, देखिए शाजेब, ग्रामर बुक जो है व्हाट आई एडवाइज सीएसएस के लिए मोस्टली यूज करते हैं एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। इट्स अ गुड वन। आई प्रेफर दैट यू रीड a grammar book written by an English grammarian। Wren and Martin, High School English Grammar and Composition is a very good effective book, क्योंकि उसी एक ग्रामर बुक में आपको ये तमाम पोर्शन मिल जाते हैं। अगर आपने प्रेसी के टेक्निक्स भी पढ़ने हैं वो भी उसमें है और ये तमाम एक्सरसाइजेस उसमें है। Likewise, you can also use a grammar book by Murphy, Grammar by Murphy, MURPHY। उसकी ग्रामर बुक भी बड़ी इफेक्टिव है। और अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश है, सो दैट इज आल्सो अ वेरी इफेक्टिव वन। अब द पॉइंट इज, प्लीज कीप इट इन माइंड, each one of you, okay, well, I am writing for example the name of the books. One is High School English Grammar and Composition by Wren and Martin। किसी के पास ये बुक है?
ठीक है, जिनके पास है, अगर किसी के पास ये बुक है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनी अदर बुक, इट्स अ गुड वन. Likewise, you can use a book. By Murphy. ठीक है, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं अक्सर एडवाइस करता हूं हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, क्योंकि उसमें सिर्फ रूल्स आपको नहीं दिए बल्कि उस रूल्स को एक्सप्लेन भी किया है. इमरान, इफ यू हैव द बुक बाय मर्फी दैट इज फाइन, you don't need to be confused about कि कौन सी बुक. Both these grammar books are, very good books. You need to only have one with you so that you may not confuse yourself. ठीक है, अब इसके साथ, हाँ, शाइस्ता, यस, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, ये हम में से ज्यादातर लोगों के पास होती है ये बुक, लेकिन द नीड इज टू रीड इट. अब शाइस्ता आप बताएं, आपके पास व्हेन यू आर इन 8th क्लास यू बॉट दिस बुक, मुझे ये बताएं कभी आपने इस बुक को पढ़ा है सही डिटेल से, या यू हैव जस्ट रेड इट सम सेलेक्टेड पोर्शन? यस शाइस्ता. हाँ, देखिए सेलेक्टिव पोर्शन, लेकिन अभी क्या है कि यू नीड टू रीड इट. देखिए हमारा नोवा हैज गुड इफेक्टिव बुक, एंड यस, नोवा's book are sufficient. And what I'm basically saying is, देखें, you don't need to confuse yourself कि कौन सी बुक मेरे पास ये है, उसके पास वो है. एक अच्छी सी बुक, जिस तरह मैंने ये 2 ग्रामर बुक्स के नाम लिखे हैं, इसके अलावा आप कोई और भी अच्छी सी गुड ग्रामर बुक ले सकते हैं. ठीक है, लेकिन एक बुक. दूसरा, मैं जो आपके साथ व्हाट माय प्रैक्टिस इज, कि जिस तरह से मैं आपको वोकेबलरी के लिस्ट दूंगा, जिस तरह से फॉर योर पार्ट 2 प्रिपरेशन आई विल गिव यू ए बुक व्हिच हैड द प्रीवियस पेपर्स एंड द अटेम्प्ट ऑफ द प्रीवियस पेपर एंड द सॉल्यूशन, उसी के साथ ये जितने भी इसमें एक्सरसाइजेज है, फॉर एग्जांपल सेंटेंस करेक्शन, for example punctuation rules, for example preposition active passive rules, for example translation exercises, इन सब के लिए मेरे पास handouts भी हैं. The handouts, yes, definitely I have downloaded it from good sites and then I have seen. तो मैं आपको handouts इन सब के जो है शेयर करूंगा. तो अगर किसी के पास ग्रामर बुक नहीं भी है, पहले तो आप ग्रामर बुक को पढ़ें, लेकिन जो मैं नोट्स आपको सेंड करूंगा वो नोट्स भी बड़े इफेक्टिव है. व्हाई इफेक्टिव? क्योंकि उस नोट्स में रूल्स लिखे हैं रिलेटेड टू दीज डिफरेंट क्वेश्चंस, और उसी के साथ एक्सरसाइजेस हैं, और उसी को आपने पढ़ के एक्सरसाइजेस करके अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर पेपर. अब मैंने आपको जो मेरे पास मटेरियल्स हैं जो मैं आपको शेयर करूंगा उसके बारे में मैं आपको गाइड करूंगा, और देन आई विल गाइड यू अबाउट हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फ्रॉम दोज मटेरियल्स. ठीक है, उसके बाद देन आई विल टॉक अबाउट कि हम ये जब पेपर डिस्कस करेंगे, सो व्हाट विल बी माय स्ट्रेटजी, राइट, टू डिस्कस दीज क्वेश्चंस, राइट. ठीक है, yes, I'm thinking of giving you a prayer break. How much time break do you need? We will start after the break. ठीक है, this is 7:20. What is the time? Yes, we will have 20 minutes break. We will start at 7:40. ठीक है, और before going on a break, जो हमने अभी डिस्कस किया है इसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन हो, अभी हमने सिर्फ डिस्कस किया है कि इस पेपर की प्रिपरेशन कितने तरीकों से आपने करनी है. वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट दैट. ठीक है, ओके. नाउ आई एम म्यूटिंग माई सेल्फ, एंड आफ्टर 20 minutes, that is at exactly 7:40, I will
then resume my discussion. Okay, I'm muting my mic. Let us have prayer. Break.